यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जैसे हमने अभी तक मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम शुरू करने जा रहे हैं द न्यू थिंग, द न्यू चैप्टर, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। देखो, लॉज ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं बता देता हूं आपको। अभी तक हमने मोशन जब हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी अभी तक कि अगर कोई मोशन हो रहा है तो उस मोशन में इफेक्ट्स देख लिए थे। वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन कितनी है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, किस टाइप का मोशन है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। नाउ इन द लॉज ऑफ मोशन दैट इज आल्सो डिस्कस्ड, ये इसको हम कई बार डायनेमिक्स भी बोल देते हैं। डायनेमिक्स भी इसको बोल देते हैं। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू देता हूं। अभी तक हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट है, मतलब उसमें हो क्या रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट मोशन, उसका कॉज क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि कॉज कैसे पता करें या कॉज होता क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो, कॉज के लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो हमें पता है कि अगर मान लो ये कोई ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक, if it is placed on the surface and the block is of 2 kg, let's suppose, we know this thing कि whenever the force is exerted on this, let's suppose the force is exerted in this direction, तो it will start moving। ये start कर देता है मूव करना। अगर ये मूव करना शुरू कर देता है तो you can say कि इसकी acceleration कितनी होगी after some time, this is the thing, how much the distance it will travel। But now we will learn about कि when the force is applied then how much its acceleration। लेट्स सपोज एक की जगह मेरे पास 2 फोर्सेस लग रही है, देयर इज वन मोर फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस व्हिच इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। फोर्स लग किस डायरेक्शन में रही है एंड सो ऑन, एक्सेलरेशन होगी किस डायरेक्शन में, एंड दीस थिंग्स। सो हियर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिफाइनिंग द फर्स्ट थिंग, दैट इज द फोर्स। ये लिखेंगे, देखो, फोर्स इज एन एक्सटर्नल थिंग applied on a body due to which it changes its state of motion। मतलब if it is at rest it will start moving, if it is moving then it will come to rest, this is the thing। तो force is an external thing applied on a body या on a bodies due to which it changes its state of motion, right। अब हमारे पास फोर्स जो है, फोर्स के ऊपर सबसे पहले काम किसने किया, बेसिकली जो इसका कोज है, द कोज टू बी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉज, इट इज टू बी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉज। तो उसको हम न्यूटन लॉज की हेल्प से डिस्कस करते हैं, दैट इज द थिंग। जैसे, लेकिन उससे पहले मैं फोर्स को कैटेगराइज करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कैटेगराइज द फोर्स। देखो, फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। on the basis of interaction between surfaces।
forces are of two types on the basis of interaction between surfaces. Like first is A, which is called contact force. देखो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है. बेसिकली नाम से पता चल रहा है, एनी फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. अ फोर्स दैट एक्ट्स between two surfaces when there is a contact. Contact between them. A force that acts between two surfaces when there is a contact between them. So that is called contact force. जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे, मान लो that is example is friction. It is a contact force. Normal reaction. आगे मैं डिस्कस करूंगा ये सब चीजें. You can say this is the contact force. This is the contact force. जैसे मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से दिखाना चाहूंगा कि मान लो ये मेरे पास एक ब्लॉक है, mass of m kg. It is placed on the surface, and you know कि if you are applying a force, external force on this, then it has a tendency to move in this direction. And you know कि by the concept of friction, the friction will act in up backward direction. And it will act when there is a contact between the mass and the surface. अगर उनके बीच में कोई contact ना हो तो वो move नहीं करेगा. Is it right? The next thing, very important thing is that कि हमको दिखाई दे रहा है कि ये ब्लॉक इसको सरफेस को प्रेस कर रहा होगा. तो सरफेस इज ऑल्सो अप्लाइंग द नॉर्मल फोर्स ऑन दिस इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड यू कैन कॉल इट टू बी द नॉर्मल रिएक्शन. इसके बारे में आगे भी पूरा पढ़ाने वाला हूँ. नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हम बहुत पढ़ने वाले हैं. वैसे इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, तो मैं आपको बता दूं, इट इज अ फोर्स डेट एक्टिंग बिटवीन, दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये वो कॉन्टैक्ट फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है. द फोर्स, द कॉन्टैक्ट फोर्स डेट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. आगे हम पूरा डिफाइन करेंगे. The next one is a non-contact force. Non-contact force. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स देखो कब लगती है कि व्हेन देयर इज नो कॉन्टेक्ट. अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू surfaces या बिटवीन टू बॉडीज when there is no contact between them. Like we know gravitational force, we know this thing. Example, gravitational force या फिर यू कैन से इलेक्ट्रिक फोर्स.
या इलेक्ट्रोस्टैटिक, द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन चार्जेस। एटसेट्रा। हाँ जी, क्लियर? तो यू कैन डिफाइन लाइक दिस कि द फोर्सेस दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट? इसके अलावा भी लोग बहुत कैटेगराइजेशन करते हैं कि द फोर्सेस which act between the charges, electrostatic force, the forces that act between the due to magnetic field, which is called magnetic force, electromagnetic force, and so on. बट हमें उसके इतनी डेप्थ में कोई जाने की अभी जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एंड वी आर रीडिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ही मतलब देयर इज अ साइंटिस्ट न्यूटन जिसने ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि अगर कोई बॉडी किसी फोर्स के अप्लाई करने पे चल रही है तो कितना चलेगी, क्यों चल रही है, एवरीथिंग इज वेरी प्रिस्क्राइब्डली इन अ वेरी गुड वे इज डिफाइंड बाय द न्यूटन। तो देखो न्यूटन ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू इट एन एक्सटर्नल फोर्स is required to change state of body that is rest or motion। मतलब we require an external force to change state of body that is rest or motion। न्यूटन फर्स्ट लॉ में ही मतलब वो सिंपल सी बात कहता है कि अगर ये कोई बॉडी चल रही है तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी सो दैट इट विल कम एट रेस्ट। दिस एक्सटर्नल फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। सेम थिंग अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है सो वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स सो दैट इट विल स्टार्ट मूविंग। ये मूव करना शुरू कर दे, इट विल स्टार्ट मूविंग विद सम वेलोसिटी, राइट और नॉट? नेक्स्ट इसी में हम एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज द इनर्शिया। इन द न्यूटन फर्स्ट लॉ वी विल डिफाइन द टर्म व्हिच इज कॉल्ड इनर्शिया। देखो इनर्शिया क्या है समझेंगे। बेसिकली इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज इट्स चेंज इन स्टेट। किसी बॉडी की या किसी मास की ये टेंडेंसी टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे मान लो मैं इस ब्लॉक से लेता हूं, मान लो मेरे पास ये 2 kg का ब्लॉक है, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ लेट्स सपोज 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन। तो ये ब्लॉक क्या कहेगा, ये ब्लॉक कहेगा कि आई एम नॉट एबल टू मूव। ये ब्लॉक कहेगा मैं मूव ही नहीं कर सकता, बिकॉज ये मूव नहीं करेगा। मैं इसके ऊपर छोटी फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव नहीं करेगा। अगर ये मूव ही नहीं कर रहा तो हमें ऐसा लगेगा ये रेस्ट पे है। किस पे?
रेस्ट पे। मैंने इसके ऊपर 0.1 न्यूटन की फोर्स लगाई, मैंने कहा चलो, ये कहेगा मैं चल नहीं चलूंगा, तो इट मीन इट इज अपोजिंग इट्स चेंज इन स्टेट। अब देखो मैंने इस फोर्स को और बढ़ाया, ये पोज कर रहा होगा, लेकिन कुछ देर के बाद फोर्स बढ़ाने पर ये इसकी अप्लाइड फोर्स को अपोज कर नहीं पाएगा, मतलब इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, खत्म, तब ये चलना शुरू कर देगा। बट मान लो पहले ये ब्लॉक जब मैं 0.1 न्यूटन लगाता हूं नहीं चलता, 1 न्यूटन लगाता हूं तो ये ऐसे स्टेट में आ जाता है कि अभी चलना शुरू कर देगा। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक बच्चा आता है और वो इसके मास को बढ़ा देते हैं, 2 की जगह इसका मास कर देता है 5। अब 5 न्यूटन पे जब मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाता हूं तो वो फिर दोबारा नहीं चल रहा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि उस बॉडी का मास बढ़ाने से एक गिवन फोर्स के लिए भी उसकी चेंज स्टेट में चेंज ना हो सके, ऐसा पॉसिबल है। उस बॉडी का मास बढ़ाने पर उसकी गिवन स्टेट में चेंज ना हो सके, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इफ द मास ऑफ अ बॉडी चेंजेस देन इट्स टेंडेंसी टू अपोज इन चेंज इन स्टेट दैट विल ऑल्सो चेंजेस, एंड इवन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो inertia of a body, it is measured with the help of its mass. More is the mass, more will be the inertia. That is the tendency to oppose. लिखेंगे, it is the property of body or mass to oppose its change in state. Next, inertia is measured with the help of its mass. Even you can say कि inertia is directly proportional to mass. Directly proportional to mass. Inertia अलग अलग टाइप के, different types of inertia. जैसे the first one is inertia at rest. B, inertia of motion. C, inertia of direction. D, inertia of rotation.
वी नो दिस थिंग, यू हैव लर्नड अबाउट इट इन द क्लास 9th ऑल्सो. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका मतलब क्या है? मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे हम बस में खड़े होते हैं, वेन एवर वी आर इन अ बस, तो हमारी बॉडी होती है रेस्ट में बस के साथ. अब ड्राइवर बस का एकदम बस को शुरू कर दे, तो ड्राइवर क्या चाहेगा कि आप आगे चलो, बट इनर्शिया क्या कहेगा? मैं आगे जाने नहीं दूंगा. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और मास टू अपोज इट्स चेंज इन स्टेट. तो कहेगा कि आगे जाने नहीं दूंगा, तो बस तो आगे जाएगी लेकिन इनर्शिया आगे जाने नहीं देगा, तो मैं कहां गिरूंगा? पीछे की तरफ. मैं कहां गिरूंगा? पीछे की तरफ. क्या समझ आया? सेम थिंग इनर्शिया ऑफ मोशन. मान लो मेरी बॉडी पूरी मोशन में है, मैं बस में खड़ा हूं और ब्रेक एकदम अप्लाई कर दे कौन? ड्राइवर एकदम ब्रेक अप्लाई कर दे. अब ड्राइवर जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा तो होगा क्या? जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो मेरी बॉडी तो मोशन में थी, ब्रेक्स कहेगी कि रेस्ट में आओ, लेकिन मेरा इनर्शिया क्या कहेगा? आपको रेस्ट में नहीं आ रहा. इट विल अपोज द चेंज, अपोज द चेंज. तो बॉडी को वो कहेगा आपको उसमें नहीं आना, तो मैं कहां गिरूंगा? आगे की तरफ. सेम थिंग वी कैन डिफाइन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. क्या आपकी एकदम डायरेक्शन बदले? क्या बदले? डायरेक्शन. ऐसी रोटेशन में कोई बॉडी एकदम रोटेट कर रही है और उसको हम एकदम रेस्ट पे लाना चाहते हैं, तो वो रेस्ट पे नहीं आएगी, उसका मास कहेगा आपको रेस्ट पे नहीं आना. इज इट क्लियर? दैट इज थिंग आल्सो पॉसिबल. So that is the different types of inertia is defined. That is the inertia of motion, inertia of rest, inertia of direction and inertia of rotation. That is next is the second law of motion. देखो इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू इट force applied on a body is equal to rate of change of its momentum. मतलब इसका मतलब क्या? देखो, वी नो व्हाट इज मोमेंटम. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम पी वेक्टर से डिफाइन कर देते हैं. इट इज अ प्रोडक्ट of mass with velocity of given mass. With velocity of given mass. मतलब momentum is written as m into v vector. Now, according to second law, what is force? Force is rate of change of momentum. मतलब d by dt of p vector. Now what is p vector? m into v vector. If you will write it with some different thing, that will be written as, there are two things m and v. You can take, it is a differentiation of two quantities which are in product.
That is m into d by dt of v vector plus v into d by dt of m. This is what? Force applied. Here it is the force, right? If dm by dt is 0, अगर ये 0 तो dm by dt is 0, तो what is the force then? m into dv by dt. When dv by dt is called acceleration, the force will become m into a. m into a. The force will come out to be mass into acceleration. इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि force is ma, ma. The forces come out to be m into a vector. Right? This is this. मैं यहां से कुछ और पॉइंट्स भी आपको डिफाइन करना चाहूंगा. ग्राफिकल एनालिसिस से वी नो, हमें पता लग गया ये चीज क्या कि फोर्स इज व्हाट, दैट इज dp by dt. dp by dt मीन्स मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, फोर्स इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट of momentum versus time graph. Is it right or not? From there एक चीज और भी बोल सकता हूं क्या, जैसे हमें ये चीज पता लगी गई है कि एफ इज दिस, तो व्हाट इज डीपी, एफ डी टी. इफ आई इंटीग्रेट इट, that will give what is the integration of dp, that will come out to be delta v, which will be integration of f dt. यहां से क्या बोल सकता हूं, from there we can say change in momentum is the area bounded by force versus time graph. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. These 2 points are very very important. This point and this point, इसको आप ध्यान में रखिए. इसके अलावा व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. डायमेंशनल फॉर्मूला,
mlt minus 2. So clear? The next view. Newton's third law. Third law of motion. देखो ये क्या चीज बोलता है, according to it, for every action there is equal and opposite reaction. According to it, for every action there is equal and opposite reaction, but it acts on different masses. The next one, जैसे क्या इसको बोल रहे हैं, पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगा। जैसे मान लो हम जानते हैं जैसे मान लो मैं 2 ब्लॉक लेता हूं, एक्शन रिएक्शन आपको समझा रहा हूं, ये 1 kg है, ये 2 kg है। मान लो आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, दिस सरफेस इज रफ, आप इसको आगे मूव कराना चाहते हो विद सम फोर्स। जैसे ही आप इसको आगे मूव कराना चाहते हो तो इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस, क्योंकि रफ है तो ये आगे की तरफ चलना चाहेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां लेगा, पीछे। बट वी नो एवरी फोर्स एक्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां लेगा, आगे। तो यू कैन से दिस थिंग कि दीज फोर्सेस विल एक्ट इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, किसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे, इसके ऊपर आगे। तो दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस, देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। अगर हम भी मूव कर रहे हैं तो वी आर आल्सो मूविंग ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो क्या होता है, वी हैव अ फुट इन कांटेक्ट विद द सरफेस। जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने पैर के साथ विद आवर फुट हम क्या करते हैं, हम सरफेस को पीछे की तरफ पुश करते हैं, सरफेस को पीछे की तरफ पुश करते हैं। जैसे ही हम सरफेस को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो हमारे ऊपर फोर्स कहां लगती है, आगे की तरफ, एंड वी स्टार्ट मूविंग। सोच के देखो, अगर हम उसको पुश ही ना कर पाए, सरफेस स्लिपरी, तो हमारे ऊपर फोर्स ही नहीं लगती एंड वी आर नॉट एबल टू मूव। यू कैन से दिस थिंग, राइट? देयर इज वन मोर टर्म डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड इंपल्स, a very important term, impulse. देखो क्या impulse, पहले तो impulse डिफाइन किसके लिए करते हैं, for the forces
which acts for very small interval of time. Which acts for very small interval of time, we are not able to calculate magnitude of force. We are not able to calculate magnitude of force. तो हम force का magnitude नहीं निकाल रहे. Next. And we define impulse for those forces. अब impulse होता क्या है? This is the question. Impulse is defined as change in momentum of given body. मतलब impulse is defined as change in momentum of given body. तो इसको बोल देते हैं हम चेंज इन मोमेंटम के इक्वल. राइट. जैसे इससे मैं और क्या डिफाइन कर सकता हूँ. व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? दिस इज इम्पल्स. So it will be integration of f dt. Now we know this thing. The impulse is the area bounded by force versus graph. जैसे हमारे पास ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है. अब हमको इम्पल्स क्या होगा? मान लो मेरे को इम्पल्स निकालना है बिटवीन T1 एंड T2. So it is the area bounded. This is the area bounded. That we can calculate easily, right? So in this way we will define the impulse. The next one. Next we are defining problems related to it.
लिखो प्रॉब्लम्स. The first problem. A ball of mass 100 gram falls from a height of 5 meters. Strikes the surface and rises up to a 3.2 meter. If ball remain in contact with surface for 2 seconds, 0.2 seconds, then calculate average force exerted. मतलब इसमें ये हो रहा है, ये हमारे पास सरफेस है, एक जो बॉल है वो 5 मीटर से फेंकी जाती है, गिरती है, तो व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम इट्स u0 है, ये आगे स्ट्राइक करती है, जब ये स्ट्राइक करेगी तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी v इनिशियल, दैट इज √2gh, which will come out to be how much? 2 into g, 2 into h, 10 into 10, 100, which will come out to be 10 meter per second. Then it again rises, ये मान लो v2 चलता है, up to a height of 3.2 meter. तो यहाँ पे देखिए इसका v दोबारा क्या हो जाएगा, 0. तो मैं क्या लगा सकता हूँ, बाय इफ इट राइजेज अप टू हाइट ऑफ 3.2 मीटर, तो आई कैन कैलकुलेट कि इसको कितनी इसकी वेलोसिटी होगी, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ. कैसे? ये इसको v फाइनल बोलो, बाय देन इस पॉइंट को a बोल दो, इस पॉइंट को b बोल दो, a टू b. इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो a to b because it's a constant acceleration motion. G is acting in downward direction. तो मैं क्या कह सकता हूँ, v final is 0, v initial is this में जो हमने निकालना है +2, a क्या लग रहा है डाउनवर्ड, s से ऊपर की तरफ, that is 3.2. That will come out to be 64. V final is 8 meter per second. It is 8.
we have to calculate average force. चेंज इन मोमेंटम, मान लो इस डायरेक्शन का पॉजिटिव, मान लो इसको नेगेटिव, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी फाइनल, वी फाइनल आई एम टेकिंग पॉजिटिव, माइनस ऑफ m into v initial by time. And how much is the time? That is the contact time. Contact time is how much? 0.2 second. V final is 8. 16 plus 0.2. It is 100 gram. Mass is 100 gram. अगर mass 100 gram है तो I can say it will be 0.1 kg into 18 by 0.2. That will come out to be how much? 9 Newton. Average force exerted is how much? 9 Newton. So it will come out to be 9 Newton. Clear है? इस तरीके से हम इसका एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड देखेंगे, फॉर ए गिवन फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, कैलकुलेट impulse impulse in 10 seconds. Average force exerted. This is the graph. This force is 10 Newton. Right?
अब मेरे को क्या निकालना है, इम्पल्स ऑफ अ बॉडी इन 10 सेकेंड्स, इन 5 सेकेंड्स कर लो इसको। इम्पल्स क्या होगा, दिस इज द फोर्स, area bounded. Now what is the area bounded? Area bounded is this total area, ये जो total area, ये टोटल एरिया मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखो पता लग रहा है मेरे को, इसके अंदर ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया सेम होगा, तो टोटल एरिया इज हाउ मच, हाफ बेस इज 1, हाइट इज 10, तो 5 आएगा। ऐसे इसका भी हाफ बेस इंटू हाइट, इसका बेस कितना है, इसका बेस 2 है, बेस इज 2, हाइट इज बेस, तो इसका 10 आएगा, इसका 5, इसका 10, तो 5 + 10 15, एंड ये क्या रेक्टेंगल है, 3 × 10 30, तो व्हाट इज द इम्पल्स 45, चेंज इन मोमेंटम है kg मीटर पर सेकेंड, that is equal to change in momentum. Now, what is the average force? Change in momentum. Change in momentum is 45. Newton. Is it clear to all of you? हाँ जी, clear है. So it is about this problem. You can write this one easily.